Actually, due to the cyclone which affected not only Bangladesh and West Bengal but whole of Northeast, the rains were there in Manipur also, very heavy rains, both in the hills and valley. And as you know, the topography of Manipur is such that all the water, when heavy rains takes place in the hills, it comes down to the valley. And in the valley, the rivers gets inundated. So because of these heavy rains and lot of landslides in the hilly areas, lot of rainwater came down to Imphal valley. And especially in all the rivers, whether it is Imphal river or Nambol river, Iril river or all rivers, the water level became very, very high and alarming. And because of continuous heavy rains, some portions of the river bank got breached. And because of breaches, the water came down in the town area. And we, from the side of the government, we tried our best to control the situation. And our water resource department was very active. And many of the breaches which took place, more than I think around 24, 25 breaches, all of them have been controlled now and they all have been blocked. But because the water has come inside the localities, our first priority in the last 2-3 days was to evacuate the peoples. And with the help of NDRF, SDRF, Army, Assam Rifle, local volunteers, Loktak Development Authority and other support of the public, we effectively managed to take away the people from the affected areas, and they have been camped in the different relief camps. Some of them have gone to their relatives also. Apart from that, those people who are still residing in their houses, either on first or second floor, our priority was to provide them drinking water and the edible items. That also, through our deputy commissioners and other officers, we are doing our best. Now, at present, today's situation, evacuation more or less has been completed, I should say. But those people who are living there, we have to provide them food and drinking water, which we are doing. Side by side, we also want to take the water away from those localities, for which pumpings also have been started by the government agencies in different areas. So how many funds has been allocated for this, for the immediate relief water? Okay, actually, if you see, this situation started around 15 days back. When you remember, there was a heavy rainstorm and hailstorms, and because of that, more than 28,000, 30,000 houses were damaged. And from that time onwards, continuously rain is there, and till now, especially in last 15 days, more than 35 crore rupees have been given by Government of Manipur from our SDRF funds, which has been used for immediate reliefs to be given to the victims, also CGI sheets to be given to the victims, controlling the situation, managing the situation, and other losses like crop losses and others will be done later on the basis of assessment. Because there is a huge loss starting from the time of hailstorm, so that is why we have also submitted a memorandum to Government of India 5 days back, not including the losses of this present flood situation, but of the previous hailstorm, that is around 675 crores. As far as this is concerned, as soon as the situation becomes normalized, we will have the assessment of all the losses, and then we will submit another subsequent report to Government of India. What is the present status right now? Situation? The present status is quite improved now, and I am hopeful that the full situation may take 2-3 days more time to get normalized, because now the priority is to drain out the water which is stagnant at many places, and also to provide livelihood support as well as food and drinking water to all the affected families. And thirdly, it is very important that when the situation becomes normal, then cleanliness and the medication of the ill people, because there may be a fear that epidemics may take place. So from yesterday onwards, medical department has taken very proactive measures, and in Laikai they are going and they are giving the medications
and medicines for those people who are affected. Okay. So how many areas, how many houses has been affected, and how many families has been affected, how many has been in the relief camp, and how many agricultural land has been affected so far? As of now, in the number side also, how many? Yeah, actually, as per topography, if you see, the situation is started from the Imphal East district. Now it is going, all the drainage, all the water logging is going towards Imphal West, and slowly it will go towards Bishnupur side, Nambol side, and finally the water will submerge into the Loktak Lake. If you see the situation as of today, I should say that around a population of around 1,26,000 has been affected, and the number of localities who have been affected by this flood situation is around 255, both in the hills and valley. And if you see the houses damage, it is around 16,200 houses, and number of persons so far we have evacuated around 21,000. And relief camps we have opened in different locations, and there are around 51 relief camps which are operating both in the valley and as well as in the hills. And if you see the total crop area, of course the assessment will be not final today, because still many places it is still waterlogged, but around 522 hectares of land crop has been affected. And similarly, infrastructure damages also has taken place, like schools buildings have been damaged, or some other government buildings have been damaged, roads have been damaged, which are also around 24 in number. And 292 places in the hills, the landslide also has taken place, and so far around 4 deaths have taken place in our state. नमस्कार, मेरा नाम एमएच खान है और मैं यहाँ पर मणिपुर में इस समय विशेष मुख्य सचिव हूँ, और इस समय आपदा प्रबंधन विभाग को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सर, अभी मणिपुर में फिलहाल जो हुआ था, बाढ़ जो आया था, इसके बारे में आप संसद में आप उसको डिटेल करेंगे। आप सबको पता ही होगा कि यो स्टॉर्म आया, साइक्लोन आया बांग्लादेश में, जिसने हमारे वेस्ट बंगाल को भी प्रभावित किया, और साथ ही साथ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न्स के जितने भी स्टेट्स हैं उस पर इसका बहुत असर पड़ा। इसी क्रम में मणिपुर में भी इसकी वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी है। और मणिपुर की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इस प्रकार है कि जब पहाड़ों पे पानी बरसता है और बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, तो उसका मलबा और उसका पानी जो है वो सब नीचे हमारी घाटी में आता है, और घाटी में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो हमारी नदियां उफान पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर नदियों में जो उनके तट होते हैं, रिवर बैंक होते हैं, वो टूट जाते हैं। उसको टूटने के पश्चात उसका जो पानी है वो पूरा जो है हमारा शहर में आ गया, जिसकी वजह से ये परिस्थिति हुई। और चूंकि बारिश बहुत हो रही थी तो इस वजह से इसको नियंत्रण करने में हमने तुरंत प्रभावी कदम उठाए। सबसे पहले हमारी पुलिस, हमारी एसडीआरएफ टीम, हमारे यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं वो, और वॉलंटियर्स, इन सब ने जो है काम करना शुरू कर दिया। एनडीआरएफ की टीम हमारी एक कोहिमा से भी मंगाई गई, और उसके पश्चात जब हमने देखा कि और आवश्यकता है तो हमने भारत सरकार को अनुरोध करके बाई एयर डिब्रूगढ़ से भी एनडीआरएफ की टीम आई, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी को भी बुलाया गया, असम राइफल जो यहाँ पर है उन सब ने भी सहयोग किया, जिसकी वजह से हमारी जो सिचुएशन थी उसको काफी नियंत्रण में लिया गया। इसमें जो है कई एरियाज में जो है चूंकि पानी भर गया है, तो पहले तो हमने उनको सबसे पहले जान और माल की सुरक्षा के हिसाब से जो लोग बुढ़े थे या जो लोग मरीज थे और बीमार थे उनको निकालने की प्रक्रिया करी। उसके पश्चात और लोगों को निकाला ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, और फिर हमने रिलीफ कैंप में उनको रखा या वो अपने अपने रिश्तेदारों के घर में चले गए। अब आज की डेट में परिस्थिति ये है कि सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, काफी इम्प्रूव हो गई है। कल दोपहर से और आज पूरे दिन कोई बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे नदियों का जलस्तर भी नीचे चला गया है। लेकिन जो जो मोहल्लों में, गलियों में अभी पानी भरा हुआ है उसकी वजह से परेशानी है। तो इस वजह से जहां जहां पर पानी भरा हुआ है और लोग अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं,
हमारी पहली प्रायोरिटी यही है और हम वो कर रहे हैं कि उनको पानी पहुंचाया जाए पीने का और खाने का सामान पहुंचाया जाए, जो कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्स सुचारू रूप से कर रहे हैं। साथ ही साथ जहां पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है उसको निकालने के लिए पंपिंग के द्वारा भी इसकी व्यवस्था की गई है और ये कार्य जारी है। मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में ये पूरा पानी नीचे स्तर पे आ जाएगा और उसके बाद में सिचुएशन जो है हमारी सामान्य होने की तरफ बढ़ जाएगी। भारत की सरकार से कितना मतलब इसके लिए सैंक्शन जो किया? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही कोई आपदा होती है तो उसमें राज्य सरकार अपने तरफ से पैसा सैंक्शन करती है। तो जो पहले हेल स्टॉर्म हुआ था 15 दिन पहले, उसके दुर्घटना से लेके अब तक जो ये आपदा हुई है, इसमें राज्य सरकार ने तुरंत अपने प्रभावी कदम उठाए और अब तक 35 करोड़ रुपया जो है इसमें इमीडिएट रिलीफ फंड के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया है, जिसके द्वारा डिप्टी कमिश्नर्स ने तुरंत इस पे एक्शन लिया और साथ ही साथ सीजीआई शीट्स भी प्रोवाइड करी, खाने पीने का सामान किया, रिलीफ कैंप जहां पर हैं उनको चलाने का काम किया और जितना भी ये पानी वगैरह निकाला जा रहा है उसका काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें चूंकि बीमारी फैलने की भी संभावना है, इसलिए मेडिकल डिपार्टमेंट तुरंत इसमें प्रभावी कदम उठा लिए हैं और जहां जहां जरूरत है वहां पर मेडिसिन बांटी जा रही है। पीने का पानी की व्यवस्था पूरी पीएचईडी द्वारा करी गई है। जितने भी रिवर बैंक हमारे टूटे थे, सब जगह पे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने उनको ब्लॉक कर दिया है, इसलिए अब नदियों से कोई भी पानी शहर में नहीं आ रहा है। जो शहर में पानी है वो धीरे धीरे बह करके लोकटाक लेक की तरफ जा रहा है, लेकिन जहां जहां मोहल्लों में पानी भरा है उसको हम पंप के द्वारा निकालने की व्यवस्था सुचारू रूप से कर रहे हैं। सर, रिलीफ कैंप कितना खुला है, उसमें कितना मतलब वहाँ डिस्प्लेस पर्सन कितना वहाँ पे फैला हुआ है जी, और अभी कितना गांव में घर कितना इफेक्ट किया है, पूरा डाटा दीजिए। जी 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 देखिए, ऐसा है, इसमें जो हमारी लोकेलिटीज हैं, चाहे विलेजेस हों पहाड़ में, चाहे हमारे वैली में हों, अब तक 255 ऐसी जगहें हैं जो इसमें बहुत बहुत अफेक्टेड हुई हैं, प्रभावित हुई हैं। करीब करीब 1,27,000 की पॉपुलेशन जो है इसमें प्रभावित हुई है और करीब 16,364 इसमें हमारे घर जो हैं टूट गए हैं और करीब करीब 21,000 लोगों को हमने पानी की बाढ़ की क्षेत्रों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। 51 रिलीफ कैंप हमारे अभी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे इन रिलीफ कैंप की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पानी का स्तर कम होगा लोग अपने घर लौटना शुरू कर देंगे। इसमें हमारी कुछ फसलों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन उसका अभी पूरा अनुमान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है, लेकिन मोटा मोटी करीब 522 हेक्टेयर में फसलों का नुकसान हुआ है। इसी तरह से कई जगह सड़कें टूटी हैं, कई जगह कुछ हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो प्रभावित हुई हैं, वो भी करीब 224 नंबर के आसपास है और करीब 292 जगह में पहाड़ में लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं। लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि हमारे दोनों जो नेशनल हाईवे हैं वो सुचारू रूप से चलें, क्योंकि पूरी हमारी सप्लाई जो है वो NH2 और NH37 पर निर्भर है और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने NHIDCL की मदद से तुरंत मलबा को क्लियर करते हुए जहां जहां पे जरूरत थी और हमारे दोनों नेशनल हाईवे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कितना कैजुअलिटीज कितना? अभी तक मात्र सिर्फ 4 कैजुअलिटीज हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने लोगों को निकालने में बहुत ही प्रभावी कदम उठाए थे और जल्दी जल्दी निकाला और जहां पर भी जरूरत थी उसको मेडिकल का उनको सुविधा दी। इस वजह से सिर्फ 4 डेथ हमारे राज्य में हुई हैं। वो भी बहुत दुखद है कि हम 4 यहाँ पर हमारे साथी लोग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन प्रभावी कदम उठाने से इस तरह की कैलेमिटीज को रोकने में हमने बहुत प्रभावी कदम उठाए और कोई भी आगे कैलेमिटी नहीं हो रही है।